according to that liquid drop model, that binding energy of a nucleus can have 5 terms. I can write that binding energy, and this binding energy is a function of atomic number and mass number that we have seen. सर Yes. बोर्ड ज्यादा ब्राइट है. बहुत ज्यादा ब्राइटनेस हो रखी है. Okay. You know? Is it okay now? Yes, sir. Well, so we can see that binding energy of a nucleus is function of atomic number and mass number, right? And it has 5 terms. First is volume energy term, that is AV into A. Then you have a surface energy term, that is AS into A the power 2/3, right? Third term is your Coulomb energy term, AC Z square divided by A the power 1/3, right? Next term, this asymmetric energy term, and that can be written as A of A, and then you have A minus 2Z chi square divided by A. And last term is your pairing term, that is delta, right? Now, for a given isobaric family, suppose you have an isobaric family. Isobaric family में क्या होती है? Mass number same, but atomic number is variable. So I can say that for a given isobaric family, your mass number is constant, but atomic number is variable. Atomic number is not same. So according to the definition of isobar, mass number is same. It means mass number is constant, but atomic number is not same. Or I can say that atomic number is not constant, or it is variable. So I can say for a given isobaric family, for a given, सर बीच में बोर्ड ब्लर हो रहा है बिल्कुल. अभी ठीक दिख रहा है? सर अब ठीक हो गया, लेकिन बीच में ब्लर हो जाता है. अच्छा, फिर हो तो बताना मेरे को, ठीक है? ओके सर. Maybe because of internet issues. Okay, that will be fixed. Okay. Okay, for a given isobaric family, I'll continue, it will be fixed within a minute. Okay. So for a given isobaric family, your mass number will be constant. Okay. But atomic number is variable, right? अब बाइंडिंग एनर्जी कोई आइसोबैरिक फैमिली का हम देखेंगे, वहां पे क्या होगा, एक मास नंबर मिलेगा, दैट विल बी फिक्स्ड, बट बाइंडिंग एनर्जी विल बी varying according to the atomic number, है ना? So for a particular isobaric family, binding energy will be a function of Z, ठीक है ना? So from a isobaric family, which one will be the most stable, that I can predict from liquid drop model, because I can see binding energy is a function of Z. Okay, function of Z. And for most stable nucleus, binding energy will be maximum. For most stable nucleus, binding energy will be maximum. Okay. And I can find the value of atomic number corresponding to that most stable nucleus. For a given isobaric family, mass number will be constant. So binding energy will be function of Z or atomic number. So from a given isobaric family, most stable nucleus will have maximum binding energy, है ना?
and binding energy is a function of Z. ठीक है ना? So for most stable nucleus, derivative of binding energy with respect to Z, that will be 0. From there, I can calculate the atomic number of most stable nucleus. Okay, so I can write for a given isobaric family, for most stable nucleus, for a given isobaric family, most stable nucleus will be corresponding to del BE by del Z. And I'm taking that atomic number of most stable nucleus is Z0. So that will be 0. ऐसे ही करते हो ना आप, कोई फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो, कैसे निकालते हो, है ना? So here, है ना, this is your function and that function is a function of Z, है ना? तो इसका मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते हैं हम, ना? Function is maximum at Z0. So del B by del Z will be 0 at Z equals to Z0, है ना? So basic, I mean, concept of mathematics I'm using here, है ना? Now I'll differentiate this function. I can see first term, second term, they are not function of Z, so that will be del B by del Z. For first and second term, it will be 0 minus 0. From third term, I'll get क्या मिल जाएगा आपको? Twice AC Z0 by a the power 1 by 3. Okay. What about fourth term? So you have to differentiate this with respect to Z first. And again, है ना, if you differentiate with respect to Z, आपको क्या मिलेगी? This will come here as a multiplication factor, right? Again, you have to differentiate this function with respect to Z. And that will provide you कितना मिलेगा? अगर further a minus 2Z का differentiate करोगे तो क्या मिलेगा आपको? -2. -2. So you have two factor when you are differentiating this, but this is not exactly Z. So you are again differentiating with respect to Z, that is providing -2. So 2 into -2, that is -4, and you have minus. So as a result, you will get 4 A of A, then you will have A minus twice Z0 divided by A, right? And I can see that delta is either 0 or it is a function of mass number, and you are differentiating with respect to Z, but mass number is constant. So last term will also be 0. ठीक है ना? Now what I'll do, I'll multiply both side by I'll multiply both side by minus A. Minus A means minus mass number. So this term will not affect anything because this is 0. This term, A term क्या हो जाएगी? Sorry, minus I'll multiply both side by minus A by 2, है ना? तो 0 टर्म का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो 3 टर्म 0 है उसका तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? इस साइड भी आप क्या मल्टीप्लाई करो? माइनस A by 2. तो ये भी एज इट इज ऐसा ही रहेगा, 0 ही रहेगा, है ना? यहाँ पे शायद आपका एक माइनस था, राइट, इसके सामने. नाउ इफ यू bring this minus A by 2 inside bracket, so this 2 will be cancelled, है ना? You have minus plus 2 will be cancelled, and in a numerator you have A, denominator में क्या है? A the power 1 by 3. So if you combine, you will get that power, that will be A the power 2 by 3. और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? This A will be cancelled, और यहाँ से आपका -2 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे -1 by 2, और यहाँ पे क्या था आपका? 4 था, सो इट विल बी -2 हो जाएगा. ठीक है ना? इज इट क्लियर? चेक करो जरा, check and tell me, is it correct? Now you have a here Z0 in this
term you have a Z naught. If you combine, so in the first term you will get AC a the power 2/3. In the second term क्या मिलेगा आपको 4a of a, and that will be equals to this term you are bringing to right hand side. You have a minus, that will be right hand side में लेके जाओगे तो it will be plus twice a of a, and you have a mass number. So it means I can find the atomic number of most stable nucleus for a given isobaric family, and that will be depends upon mass number and some coefficient like asymmetric energy coefficient and Coulomb coefficient. It will be like AC a the power 2/3, and you have a 4a of a. It's really very, very important for your CSIR net. So they will provide you this coefficient, asymmetric energy coefficient and Coulomb energy coefficient, and they will provide you the mass number for a given isobaric family, and they will ask you calculate the atomic number of most stable nucleus for this isobaric family. Okay, so they will provide you, I can see that atomic number of most stable nucleus for a given isobaric family, it will only depends upon mass number for that isobaric family, that will be provided, and it will not depends upon all that coefficient, 5 coefficient. It will only depends upon asymmetric energy coefficient and Coulomb energy coefficient. That will also be provided in a question. Okay, but this formula is really very, very important for CSIR net examination, especially. ठीक है ना? Okay, let us solve few problems because this topic is really important for your exam. Let us solve few problems. Okay, and the first problem. You have a two mirror nuclei. You have a mirror nuclei. Chromium 2449 and manganese 2549. Okay, I can see their mirror nuclei because their its proton number is matching with its neutron number. Its proton number is matching with its neutron number. They are mirror nuclei, है ना? यहाँ पे they mentioned that in this question they have mentioned that this is the mirror nuclei, and difference in the Coulomb energy for this mirror nuclei is given. That is 6 mega electron volt. See here, यहाँ पे क्या given है आपको? Difference between the Coulomb energy delta EC. EC is the Coulomb energy. Difference in the Coulomb energy between these two nuclei, that is 6 mega electron volt. So you have to calculate. You have to calculate the radius of chromium nucleus. है ना? You have to calculate. है ना? Or I can say here, better I'll use this symbol, that you have to calculate the radius of chromium nucleus. That is how much. और यहाँ पे ए भी मेंशन है, ये भी गिवन है, ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसका वैल्यू गिवन है. इसका वैल्यू कितना होती है ना? और आपली अगर आइडिया आपका है तो फिर कुछ प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो. इसका वैल्यू होती है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर. 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर. शायद नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ. ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू होती है 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फेम्टोमीटर. ठीक है ना?
थोड़ा आपको आइडिया अगर है ना, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम जो होती है CSIR नेट में या कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसका वैल्यू बहुत यूजेबल है ना। तो अगर थोड़ा आइडिया है तो दैट प्रॉब्लम यू कैन इजीली सॉल्व। बट यहाँ पे इस प्रॉब्लम में स्पेशली ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करनी है, क्रोमियम न्यूक्लियस का रेडियस कैलकुलेट करनी है। अब मेरे को ये बताओ कि क्रोमियम और मैंगनीज का रेडियस क्या सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? Will there be different in radius of chromium and manganese? No, sir. It No. will be Okay. Yes. No, it will not be different because their mass number same. So in that question, they may ask you what will the radius of manganese as well. So let us solve that question. So we remember that Coulomb energy that we have derived for nucleus, right? So it is like, if you remember, or if you see, it is like 1 by 4 pi epsilon naught, then 3 by 5 q square by r, right? You'll get this will be, and you'll have minus sign here also, because this Coulomb energy is decreasing the binding energy of your nucleus, right? There's a minus sign also. And exactly same this Coulomb energy you is to get in electrostatic also. कहाँ पे मिलता है आपको? For solid sphere, right? For solid sphere you will get this much of energy when you will do that electrostatic course. ठीक है ना? अब Q न्यूक्लियस का कितना होता है चार्ज? न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है? ZE, राइट? यहाँ पे जो चार्ज लिखे हो आप, वी हैव डिराइव्ड दिस, आप चेक करो आपका कॉपी है ना, पहले वाला जो लेक्चर है ना, कल के पहले जो लेक्चर है वहाँ पे डिस्कस किया। यहाँ पे जो चार्ज होती है न्यूक्लियस का कितना होती है? Z स्क्वायर, राइट? बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियस, इनसाइड न्यूक्लियस टोटल चार्ज इज नथिंग बट एटॉमिक नंबर इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. So in place of Q, I can write ZE, so it will be like Z square, and I can bring that E square here. Why? Because I know that value of E square by 4 by epsilon naught. Okay. So for chromium nucleus, for chromium 2449, I'll write that Coulomb energy on EC on, and that will be minus E square by 4 pi epsilon naught, right? And then you have 3 by 5 Z on square by R. And for, so this is your Coulomb energy for chromium. And for manganese 2549, I'll write that Coulomb energy as EC2, okay, and that will be E square by 4 pi epsilon naught 3 by 5 Z2 square by R. And let us give that numbering of equation 1 and 2. Let us give that numbering of equation 1 and 2. Okay. ठीक है ना? Now, if you subtract equation 2 from 1, what will happen? So then you will have delta C. Then you will get delta C or difference in the Coulomb energy, and that will be your EC2 minus EC1. ठीक है ना? Can you please write that formula for that? लिखो जरा आप लोग. You write it. I'll clean that board. So
it will be how much? You will have some common factor, right? So it will be like क्या आ जाएगा बताओ. Now you see यहाँ पे आपको जो डिफरेंस लेनी है डेल्टा ईसी, आई मेड अ लिटिल मिस्टेक यार. डेल्टा ईसी जो लेनी है आपको, देखो डेल्टा ईसी का वैल्यू क्या गिवन है आपका? डेल्टा ईसी कितना गिवन है? 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डेल्टा ईसी सम पॉजिटिव नंबर. तो आपको EC2 करनी है, EC2 माइनस EC1 करनी है, या EC1 माइनस EC2 करनी है? सर EC1 माइनस EC2। Exactly, because EC1 is actually larger as compared to EC2. क्यों EC1 लार्जर है? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस साइन. EC1 में माइनस, दोनों में कूलम्ब एनर्जी इज माइनस इन नेचर, और EC1 में क्या है? Z ऑन स्क्वायर है. EC2 में क्या है? Z2 स्क्वायर. और Z ऑन मींस द क्रोमियम नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम. एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज स्मॉलर देन मैंगानीज. सो ऑब्वियसली क्या है? EC1 इज ग्रेटर देन EC2. तो फॉर आपको डिफरेंस डेल्टा EC से पता चल रहा है कि दे हैव गिवन द वैल्यू ऑफ EC1 माइनस EC2, है ना? और यहाँ पे मेंशन भी था एक्चुअली, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे. इट विल बी लाइक EC1 minus EC2. Sorry for the mistake. Okay. So if you do it, you will have, this will be common, right? E square by 4 pi epsilon naught, that will be common. In fact, 3 by 5 will also be common. But I am writing separately because I know the value of this that is given. Inside bracket you will have, क्या आ जाएगी यहाँ पे देखो, ये आपका Z2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस Z ऑन का स्क्वायर आ जाएगा. Because in a EC1 you have a minus Z on square, then minus of minus Z2 square. EC2 में क्या है आपका? minus Z2 square है, right? Then you have a minus here, so that will make plus Z2 square, and you will have minus Z2 square. And that value is provided. That is your कितना है? 6 mega electron volt. Now I'll substitute that value of E square by 4 pi epsilon naught, that is provided 1.44 mega electron volt femtometer. In fact, I can write that 3 by 5 here. And what I made mistake, I have not written here the radius of nucleus, right? I can have to write the radius of nucleus also. So Z2 is the atomic number of manganese, that is 25 ka square minus 24 ka square divided by a radius of either chromium or manganese, and that will be 6 mega electron volt. So this mega electron volt will be cancelled with this. As a result, I'll get the radius of either chromium or manganese, that will be 1.44. Then 3 by 5, or I can write like this, 3 into 25 ka square minus 24 ka square divide by, क्या आ जाएगा divide by? You have 5 also, and you have a 6 also, and that unit will be femtometer. Can you please calculate and tell me? So to calculate this value, we'll basically get 7.05 femtometer. So that is the radius of chromium or manganese also. Okay, so this will be the answer. Okay. ठीक है ना?
Well, so let us solve one more problem. Tell me if you have any doubt. The next problem, problem number 2. So they have provided you the binding energy formula in a liquid drop model. So they have provided you that formula, that is AV A S A the power 2/3. Then AC Z minus 1 by A the power 1/3. Then is A minus 2Z square by A. Finally, you have a delta term. That is they have provided you. है ना? नहीं दिख रहा है ना last term? You are not able to see this term, right? You have a last term, fourth term, that is asymmetric energy A minus 2Z square divided by A, and you have a delta term. देखो ये आपका CSIR एग्जाम में ये फॉर्मूला आपका गिवन होती है, ठीक है ना? क्यों गिवन होती है? क्योंकि कुछ कुछ बुक में जैसे हम लोगों ने डिराइव किया था थर्ड टर्म को, क्या डिराइव किया था? Z स्क्वायर बाई A दी पावर 1/3, राइट? Yes, sir. कुछ कुछ बुक में क्या होती है, Z इंटू Z माइनस 1 भी लेते हैं, है ना? तो उस डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए, है ना, क्योंकि अगर Z स्क्वायर लेके चलोगे या Z इंटू Z माइनस 1 लेके चलोगे, है ना, तो क्या होगा, थोड़ा आंसर का क्या होगा, फर्क पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत पड़ेगा, ज्यादा नहीं पड़ेगा। उसको दूर करने के लिए वो लोग मेंशन कर देते हैं, कभी Z स्क्वायर मेंशन कर देते हैं, कभी Z इंटू Z माइनस 1 मेंशन कर देते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या देते हैं, आंसर आपको गिवन होती है। तो जिस वे में आपको गिवन रहेगा उसी को लेके आपको चलना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे ये मेंशनड है ना? डोंट वरी, इन CSIR एग्जाम दे विल प्रोवाइड यू दिस, दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम लिक्विड ड्रॉप मॉडल, स्पेशली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल प्रोवाइड यू दैट फार्मूला आल्सो। बट गेट में आपको प्रोवाइड नहीं होती। गेट में क्या पूछा जाता है कि वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल किस हिसाब से वेरी करेगी मास नंबर, बताओ? अगर आपको पूछा गया अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल वॉल्यूम एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरीज विथ मास नंबर एज व्हाट, बताओ क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिस मच। पर न्यूक्लियन मतलब क्या है, यू आर डिवाइडिंग बाय मास नंबर। This is your total volume energy of a nucleus. Volume energy per nucleon means you are dividing that volume energy divided by mass number. So that will be independent on mass number. AV by A, sorry, AV into A by A, that is equals to AV. That is independent on mass number. Surface energy, है ना? गेट में किस तरह की क्वेश्चन पूछा जाएगा और नेट में किस तरह की क्वेश्चन पूछा जाएगा, that I am explaining you. अगर आपको गेट में कभी इस तरह का इतना बड़ा नहीं पूछा जाता है, एक एक टर्म को लेकर पूछा जाता है, और नेट में आपको पूरा फॉर्मूला गिवन होती है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पूछा जाता है कि मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर कितना होगा। अब बताओ, अगर आपको पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरीज विथ मास नंबर एज व्हाट, क्या होगी? सो दिस इज योर सरफेस एनर्जी, this is your total surface energy of a nucleus. Surface energy per nucleon means total surface energy divided by mass number A. So that will be like AS A the power 2/3 by A. तो क्या आ जाएगी आपका फैक्टर?
AP for -1. एग्जैक्टली है ना। तो आपको ये सब ध्यान देना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे कैलकुलेट किए हो, ये दिस इज द टोटल वॉल्यूम एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, द टोटल सरफेस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, इज द कूलम्ब एनर्जी। कूलम्ब एनर्जी से अगर पूछा गया कि कूलम्ब एनर्जी वेरीज विद मास नंबर इज व्हाट, ए दी पावर 1/3। बट कभी आपको एटॉमिक नंबर के साथ कैसे वेरी होता है नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ बुक में जेड स्क्वायर लेते हैं, कभी जेड इंटू जेड माइनस 1 भी लेते हैं कुछ कुछ बुक में, है ना। सो दे विल नॉट आस्क यू हाउ इट इज वेरिंग विद एटॉमिक नंबर। Well, so let us come back to that question. So they provided you that binding energy formula according to liquid drop model, and they have provided this Coulomb coefficient also. AC is 0.7 mega electron volt, and asymmetric energy coefficient that is provided you 22.5 mega electron volt. And they ask you find Z naught for isobaric family of mass number A equals to 125. You know? So for mass number 125, there are many nucleus exist having different atomic number, but among all nucleus, which will be the most stable, that you can predict from liquid drop model, है ना। तो यहाँ पे आपका इस मास नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको Z नॉट निकालनी है ना। तो you can identify for a given isobaric family which one will be the most stable nucleus. Well, so again for most stable, I have to differentiate with respect to Z, and I have to keep Z equals to Z naught, because I am assuming Z naught is the atomic number of most stable nucleus for isobaric family A equals to 125. So again, first two term will be 0. I am not writing that, it's meaningless, right? I'll directly write that third term. So it will be AC into 2 Z naught minus 1, right? Why? Because I can keep this Z inside bracket, so it will be Z square minus 1, and I'll differentiate separately. So Z square का 2Z हो जाएगी, और Z square minus Z, Z square का 2Z हो जाएगी, Z का 1 हो जाएगी, and I'm keeping in place of Z, that is Z naught, and of course there will be division factor, that will be A the power 1/3, and there will be not change in that fourth term. It will be as it is, जैसे हमने पहले किए हैं। क्या आया था वहां पे, 4A of A, then you will have A minus 2Z naught divided by A, and that will be equals to 0, है ना। That will be equals to 0. I think it is going outside, है ना। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, I can write on the left hand side. आप लोग लिख लोगे? Yes sir. आप लोग लिख लोगे या मैं लिख लूं यहाँ पे? Sir लिख लेंगे. Okay, because we already have discussed, that's why I'm saying. Okay. सर इक्वल के बाद Equals to 0. 0. Yes. Now what I'll do, I'll multiply both sides by minus A. I'll multiply both sides by minus A. So you have a AC by A the power 1/3 2Z naught minus 1. And then we'll have 4A of A by A. Then you have A minus twice of Z naught. And that is equals to 0 into minus A on the right hand side. That will again be 0. That will again be 0. Right? That will again be 0. Now I'll keep that minus on inside bracket. So it will be
AC a the power 2 by 3, and then we'll have 2z0 minus 1 minus 4. Now this a will be cancelled in the second term, minus will come here and will be minus, plus into minus, that will be minus 4a of a, and then we'll have a minus twice z0, that will be equals to 0. Okay. Again I'll use that same step, that I'll keep z0 common. So in the first term, that will provide you twice AC a the power 2 by 3. In this term, you'll have minus into minus, 2 into 4, that is equals to 8, and then we will have a of a, and you have taken that z0 common. Basically you have merged these two term, z term, and on the right hand side क्या जाएगा right hand side में? This term you have minus, that will make you plus 4 a of a into a, and this term, that will be AC a the power 2 by 3. It means z0 will be, according to this formula, 4a of a into a AC a the power 2 by 3, and you'll have 8a of a plus twice AC a the power 2 by 3. Right? Is this okay? Now you have to keep that values, right? They have provided you everything. Just you have to keep that values. So for a of a, that was given like 22.5, right? Next, you have AC, that is provided 0.7 mega electron volt. And mass number, that was like 125 ki power 2 by 3. See, that is there is a bit complicated calculation, bit नहीं है ना, इसको आपको कैलकुलेट करना है बाय हैंड. अभी तो शायद बाय यूजिंग कैलकुलेटर यू कैन कैलकुलेट, बट इनिशियली आपको बाय हैंड में ही करना पड़ता था इसे. फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 into 22.5, and then twice into 0.7 into 125 की power 2 by 3 ना. दिस इज योर 0.7. हाँ, कितना आ रहा है आप लोगों को? दिख भी नहीं रहा है ना? दिख रहा है? You cannot see this part, right? Can you see? No, sir. And why are you not saying? I didn't get initially, so I can write here also. सर ये तो खुद लिख लेंगे, वैल्यू ही तो पुट करनी है इसमें बस. You can do that also. Can you do and tell me how much you are getting? So I'm writing for all students. So it is like you have a 4 into 22.5. Then AC 0.7 into 125 की power 2 by 3, right? That 125 हाँ जी. A की value A की वैल्यू कितना गिवन है? 125. Exactly. First term 125 की power 2 by 3. didn't write, sir. First term में 125. Didn't write, sir. Yes. Very good. There's a 125 here also, because this contain mass number. Very good. So you'll have a 22.5 into 125, and then you have next term that contains AC. AC is 0.7. Then you have 125 की power 2 by 3, and in denominator you will have 8 a of a, that is given 22.5. Then you have a twice AC 0.7 into mass number, that is 125 की power 2 by 3.
52.24. So 52.24, I can ignore that 2, right? So it is like 52. Approximately it will be 52. So for a given isomeric family of mass number 125, the nucleus having atomic number 52 will be the most stable. And I can see here for this isobaric family of mass number 125, neutron number is greater than proton number, right? आपके पास मास नंबर कितना है 125 है, जहाँ पे फॉर दिस आइसोबैरिक फैमिली जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर कितना है 52 है, मास नंबर कितना है 125 है. So for this stable nucleus, neutron is greater than, or number of neutron will be greater than number of proton, because the mass number is greater than 40. तो जैसे आपका मास नंबर 40 के ऊपर चला जाता है, for stable nucleus, neutron number will be greater than proton, है ना. तो थोड़ा बहुत if you have nuclear physics knowledge, by using knowledge sometimes you can get answer without doing any calculation also. I'm not saying here it will be applicable, but you can sometimes use. Sorry. Well, so according to liquid drop model, I can write that mass of a nucleus, and this is called semi-empirical mass formula. So the mass of a nucleus MNuCl, I can write this will be predicted mass Z into MP plus, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, NMN Z. into Mn minus binding energy per C square, right? And according to liquid drop model, that binding energy I can write, that is having 5 terms. C square, sir. Exactly, it will be C square. Then you have a AV into A minus AS A the power 2 by 3, right? And then you have a Coulomb energy term AC Z square by A the power 1 by 3 minus A of A minus 2Z, A minus 2Z ka square by A, and then you have a pairing term. So this will be the mass of a nucleus according to liquid drop model, and this is called semi-empirical mass formula. Okay, but this formula is really really important for your special TIFR examination. Excuse me. How we can use this formula? You can use this formula to calculate. You can use this formula to calculate the Coulomb energy coefficient. How? You have a pair of mirror nuclei. You have a pair of mirror nuclei, and by using mass parabola, you can calculate the mass of a nucleus. Okay, mass of a nucleus you can calculate. This is even you have experimental data of mass of a nucleus. So a pair of nucleus, you know their mass.
and by using their mass you can calculate Coulomb energy coefficient. By using their mass you can calculate Coulomb energy coefficient. That's why this formula is important, and especially from here you will get question, especially in TIFR. 2-3 times they ask from this formula itself they ask question, even this year also. So how they will ask question and how will I handle that, I'm discussing on problem. If I discuss, you will get. So suppose you have a 2 nucleus, nitrogen 7 and 15 and oxygen 8 and 15. Mass of this nucleus is known and that is given. Mass of this nucleus NuCl, that is 15.000.08 atomic mass unit. U means atomic mass unit. Mass of this nucleus that is known and that is given you. $15.00307 U है ना, ये 4 नहीं है, ये आपका U मतलब एटॉमिक मास यूनिट. Only this part is given. यहाँ पे मिरर न्यूक्लिया given. ये मिरर न्यूक्लिया है कि नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आपको मिरर न्यूक्लिया भी मेंशन नहीं है, बट यू कैन गेस दिस टू आर मिरर न्यूक्लिया. इसका एटॉमिक नंबर 8 है ना, और प्रोटॉन नंबर 8 है. इनका न्यूट्रॉन नंबर के साथ मैच है. इनका न्यूट्रॉन नंबर कितना है, 15 - 7 दैट इज 8. सो इट्स प्रोटॉन नंबर इज मैचिंग विथ इट्स न्यूट्रॉन नंबर. इनका प्रोटॉन नंबर इनका न्यूट्रॉन नंबर के साथ मैच है. 15 - 8 that is 7. So they have given you 2 nuclei and they have provided you that mass number, but they are basically mirror nuclei. They mentioned or not, that is not problem. But yes, when they will provide you that new mirror nucleus. They will given you mirror nucleus to make that calculation simple. अब आपको ये गिवन है, 2 मिरर न्यूक्लियर गिवन है, दोनों का न्यूक्लियर मास गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करनी है, कूलॉम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करनी है. ठीक है ना. नाउ आई कैन सी, यहाँ पे देखो, जब आप आप दोनों का मास लिख सकते हो, दोनों का मास लिखोगे, फिर दोनों का मास को डिफरेंस करोगे, है ना, दोनों का मास का सब्सट्रैक्शन करोगे, वहां से आपका कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट दैट एसी. ठीक है. नो, नाउ इफ आई डू दैट प्रॉब्लम, इफ आई राइट online, then it will be very easy for you, but please note down that mass. Now I have a nucleus like nitrogen 7, 15, and let us take that symbol of this nucleus, mass of nucleus, that is I'll write like Z into A. Then we'll have similar formula. Whatever formula you have written, it will be same exactly. यहाँ पे आपका same formula आ जाएगी, कोई problem नहीं है, right? Just I have taken that symbol for this nucleus, and that mass of nucleus I can write similar to this formula, है ना. ये formula आपका exactly यहाँ पे आ जाएगा. This you know. Now आप बताओ कि ऑक्सीजन 8-15 के लिए हम क्या सिंबल यूज करेंगे, फिर क्या यूज करेंगे बताओ. For this nucleus, when you have a 7-15, I have assumed that 7 as an atomic number, A as a mass number, that is 15. So for this nucleus, when I'll write that mass of nucleus according to liquid drop model, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, according to liquid drop model, mass of a nucleus is function of Z and A. ठीक है ना. तो यहाँ पे देखो, दोनों का मैंने इस न्यूक्लियर नाइट्रोजन के लिए ये सिंबल यूज किया हूं, जहाँ पे Z कितना है, 7 है,
एक क्या है 15 है, तो इस न्यूक्लियस के लिए क्या है सिंबल यूज करूंगा, देखो Z यहाँ पे, plus हाँ यहाँ पे Z Z प्लस ऑन एग्जैक्टली, और मास नंबर क्या है A। अब यहाँ पे आपका जो इस मास है ये थोड़ा मॉडिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इन प्लेस ऑफ Z यू हैव टू राइट Z प्लस ऑन MP। देन नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा आपका A माइनस Z माइनस ऑन, A माइनस Z माइनस ऑन इंटू Mn, ठीक है, और ऑन बाय C स्क्वायर, right, then you have a AV into A, then A is A the power 2/3, then यहाँ पे क्या आ जाएगा AC Z प्लस ऑन का स्क्वायर बाय AB पावर 1/3। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा A of A, right, so it will be A of A by A minus 2Z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, A minus 2Z का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, चेक करो जरा, A कितना है आपका 15 है, माइनस 2Z 2 इंटू 8 15 माइनस 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये टर्म में क्या है आपका A माइनस 2Z का स्क्वायर है ना, तो देखो ये नंबर क्या है, दैट विल बी ऑन, बिकॉज A कितना है 15 है, माइनस 2Z 2 इंटू 8 दैट इज 16, 15 माइनस 16 का स्क्वायर दैट इज ऑन, है ना, तो यहाँ पे A माइनस 2Z प्लस ऑन लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो A माइनस 2Z माइनस 2, बट यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू कितना है दैट इज ऑन है। यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, लास्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, दैट विल बी 0 बिकॉज नो पेयरिंग, यहाँ पे कोई पेयरिंग है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो ऑड मास नंबर के लिए पेयरिंग टर्म कितना होता है 0 होता है, तो ये भी ऑड टर्म है और सॉरी ये भी ऑड मास नंबर है, ये भी ऑड मास नंबर है, दोनों के लिए पेयरिंग टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का न्यूक्लियर मास आई कैन राइट लाइक दिस, है ना, यहाँ पे मैंने A माइनस 2Z का स्क्वायर नहीं लिखा हूँ क्योंकि इसका वैल्यू आपको पता है कितना है ऑन है, दैट्स व्हाट आई हैव नॉट रिटन, आई हैव नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। नाइट्रोजन के लिए भी आपको यही लिखना पड़ेगा, तो नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे लिखोगे आप, अब देखो नाइट्रोजन का भी ये जब ये वाला टर्म क्या होगा A माइनस 2Z का स्क्वायर, नाइट्रोजन का ये वाला टर्म क्या आ जाएगा A माइनस 2Z का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 एग्जैक्टली ये भी आपका यही टर्म आ जाएगा एग्जैक्टली, नाइट्रोजन के लिए ये टर्म आपका Z प्लस ऑन हो जाएगा, यहाँ सॉरी नाइट्रोजन के लिए ये टर्म तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहेगा, ये आपका ऑन हो जाएगा, दैट विल बी एग्जैक्टली सेम एज दिस, और पेयरिंग टर्म यहाँ पे भी 0 होगा। अब दोनों का मास डिफरेंस अगर लिखोगे आप, देखो अच्छे से समझना, ये वाला स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोनों न्यूक्लियस का जब मास डिफरेंस लिखोगे, लाइक यू हैव ए मास ऑफ न्यूक्लियर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज Z प्लस ऑन एंड A माइनस न्यूक्लियर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज Z इंटू A, ये जब आप लिखोगे, अब बताओ क्या क्या टर्म सर्वाइव करेगा यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, दिस स्टेप इज रियली इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहले पहले वाला टर्म में क्या है आपका, इसका पहला टर्म क्या है Z प्लस ऑन MP है, पहला टर्म क्या है यहाँ पे Z प्लस ऑन P है MP है, उसमें पहला टर्म क्या था ZMP तो क्या आ जाएगा आपका MP MP आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है A माइनस Z माइनस ऑन MN है, वहां पे क्या था A minus Z तो ये क्या मिलेगा आपको एक आपका माइनस MN, ठीक है, दोनों का मास नंबर सेम है तो ये टर्म का कोई चेंज नहीं रहेगा, दोनों का मास नंबर क्या है 15 है, तो थर्ड टर्म जो है माइनस AB बाई C स्क्वायर इंटू A
है ना, दोनों का सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा दोनों का सब्सट्रैक्शन से? 0. एग्जैक्टली 0. फोर्थ टर्म अगेन डिपेंड्स अपॉन मास नंबर, दोनों का मास नंबर सेम है, दैट विल आल्सो बी 0. Yes. Okay. Now tell me what about that this term, Coulomb term. Coulomb term क्या आ जाएगा यहाँ पे? Now I can see ये टर्म तो सारे कैंसिल हो गया. यहाँ पे you have a minus sign here. Inside bracket you have a minus sign, right? तो आपने पहले ये वाला z प्लस ऑन के लिए लिखे हो तो आपको ये वाला टर्म पहले लिखना है. इससे पहले माइनस है और ये माइनस ऑलरेडी एक माइनस के साथ मल्टीप्लाई है और सी स्क्वायर भी है, राइट? तो अगर इसको कॉम्बाइनली लिखोगे, अगर देखो आप अगर कॉम्बाइनली लिखोगे, ये टर्म एक्चुअली मास के लिए ये आपका पॉजिटिव है. जब बाइंडिंग एनर्जी में लिखते हो तो ये टर्म नेगेटिव होते हैं, बट जब आप मास के लिए लिखते हो ये टर्म एक्चुअली क्या है, पॉजिटिव में है. और ये टर्म आपका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये आपका पॉजिटिव है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जब मास के लिए लिख रहे हो ये टर्म एक्चुअली पॉजिटिव है, बिकॉज ये है माइनस साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये है 1/c² ऑल्सो. तो अगर कॉम्बाइनली लिखोगे दो टर्म के लिए, दोनों के लिए, तो यू विल गेट दिस फैक्टर. प्लीज चेक इट. 1/c² and then you will have ac by a the power 1/3. Please check and tell me if I make any mistake here. Then you will have z plus 1 का square minus z² minus z². And again that fourth term will also be identical and you are making subtraction, so obviously that term will not be survive here, है ना? जो लास्ट टर्म है ये वाला. So we'll now you see इतना बड़ा कैलकुलेशन था, that makes this much, है ना? Makes very simple the difference in the mass of proton and neutron and the term that is Coulomb term. Now everything is known here, all except Coulomb coefficient. You know the mass of proton, mass of neutron, everything you know. This mass is given. कितना given था ये? Please tell me. I think it is given like 15.00307 in terms of atomic mass unit, right? This is given. कितना given था ये? 15.000 and then you have 108. 108. Right? In terms of atomic mass unit. Okay. प्रोटॉन का मास कितना है? 0.00727. राइट. न्यूट्रॉन का 1.00. 0.00866. ना, इस बार ये क्वेश्चन आया था, है ना? एग्जैक्टली मेरा क्लास से आया था, बट स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है. यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक किया था? स्टूडेंट ने बेसिकली नहीं, हमारा स्टूडेंट मिस्टेक नहीं किया, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का जो ये था स्टैटिस्टिक्स था, स्टूडेंट ने मैक्सिमम स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट तो सही किया था, है ना? बट हाँ, बाकी जो स्टूडेंट क्या किया यहाँ पे एमपी और एमएन का मास सेम ले लिया और उसमें गलत आंसर आ गया. तो टीआईएफआर में थोड़ा ये आपका ये भी जानना जरूरी है कि मास और प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन आर नॉट सेम. ठीक है ना? तो आप इक्वल नहीं ले सकते हो, है ना? So those who have taken equal mass of proton and neutron, say though they basically got wrong option. ठीक है ना? And this is again your atomic mass unit. Then you have a 1/c² AC. A कितना है? A कितना है? 15 की पावर 1/3. And you have a z plus 1 का स्क्वायर. Z plus 1 का स्क्वायर कितना है? 8, right? ठीक है ना? Now he solved it. So I'll bring this atomic mass in this side. I'll bring this atomic mass in this side
and I'll get AC by, है ना, AC by C square, है ना, and this will be 8 square minus 7 square, that is nothing but 15 by 15 की power 1 by 3, and that will be equals to 15.00307 minus 15.00008 minus 1.00727 plus 1.00866. ठीक है ना? अभी कौन सा यूनिट में आया है? एटॉमिक मास यूनिट. So I'll convert this into MeV per C square. So you have to multiply by 930 on 0.5. Then that unit will be mega electron volt per C square. It will be mega electron volt per C square. 930 1.5. Na? So on atomic mass unit is nothing but 930 1.5 mega electron volt per C square. Now see, this C square will be cancelled. C square will be cancelled, है ना? So at the end, है ना, if you calculate, है ना, ये टर्म अब ये कितना है एक्चुअली 15 by 15 का पावर 1 by 3, that is nothing but 15 की पावर कितना जाएगा ये 15 by 15 की पावर 1 by 3, that is nothing but 15 की पावर 2 by 3, right? 15 की power 2. And that I can keep on the right hand side like a denominator, and that will provide you the Coulomb coefficient, and you will get in terms of mega electron volt. So please keep in mind, when you have a atomic mass unit, if you are converting to mega electron volt, you have to multiply by 931.5, and then you will get MeV per C square. That C square basically cancelled because left hand side में 1 by C square. So at the end you will get this unit or this value, that will be कितना आ रहा है, check करो. To calculate, you will get 0.66 mega electron volt. है ना? You will get this value. अच्छा, यहाँ पे सपोज मान लो क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि बार बार एक ही डाटा देगा. अगर इसको इस तरह से दे सकता है कि आपका कूलम कोफिशिएंट भी प्रोवाइडेड है, कूलम कोफिशिएंट प्रोवाइडेड है, बट सपोज मान लो नाइट्रोजन का मास गिवन नहीं है, आपको कैलकुलेट करनी है मास ऑफ नाइट्रोजन 715, ठीक है ना, तब भी कैलकुलेट कर सकते हो. अगर थोड़ा घुमा के दे, आपको क्या दे सकते हैं कि कूलम कोफिशिएंट दे प्रोवाइडेड यू एंड दे आस्क यू टू कैलकुलेट द मास ऑफ nitrogen 715, but they have provided you the mass of oxygen 815, or they may ask you what will be the mass of oxygen 815 जहाँ पे आपका mass of nitrogen 715 given है. ठीक है ना? तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो दोनों का मिरर न्यूक्लियस का जो मास का डिफरेंस है किसके ऊपर डिपेंड है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ कूलम कोफिशिएंट, है ना. तो दो न्यूक्लियस अगर गिवन है और कूलम कोफिशिएंट गिवन है और एक मास अननोन है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो. और दोनों मास गिवन है और कूलम कोफिशिएंट पूछा गया तब भी आपने कैलकुलेट की हो, है ना. तो थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है क्वेश्चन घुमाने का. ठीक है, डू यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? इज इट क्लियर? Please, once again. आई एम सेइंग यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, टेल मी. Coulomb AC, sir. यहाँ पे ये बोला गया था आपका दो मिरर न्यूक्लियाई गिवन था, दोनों का न्यूक्लियर मास गिवन था, है ना. तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, है ना. जैसे हर एक फॉर्मूला फिजिक्स में जो पढ़ते हो, हर एक फॉर्मूला का क्या होता है, एक सिग्निफिकेंस होती है ना.
तो यहाँ पे जो मास ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है बेसिकली, जो जो आप मास ऑफ न्यूक्लियस लिखते हो अकॉर्डिंग टू सेल मॉडल, इनका एक सिग्निफिकेंस ये है कि आप कूलम्ब कोफिशिएंट को पता कर सकते हो इफ यू नो द मास ऑफ मिरर न्यूक्लियस। तो एग्जैक्टली यही किए हो यहाँ पे कि आपका दो मिरर न्यूक्लियस था, एक आपका ऑक्सीजन 815 और नाइट्रोजन 715, उन दोनों का मास पता था, दोनों का मास पता था, है ना। और आई कैन से they provided you the mass of both nucleus and they ask you to calculate the Coulomb coefficient, है ना। तो आपका तीन चीज है, मास ऑफ दो न्यूक्लियस का मास डिफरेंस, दैट डिपेंड्स अपॉन दो न्यूक्लियस, दो मिरर न्यूक्लियस का जो मास डिफरेंस है किसके ऊपर डिपेंड करती है, और आई कैन से तो कूलम्ब कोफिशिएंट जो है किसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर मैं पूछूं कि कूलम्ब कोफिशिएंट किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो Mass मिरर न्यूक्लियस का मास डिफरेंस, ठीक है ना। अब ये तो हर एक बार एग्जाम में आपको एक ही ट्रेंड में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपको कूलम्ब कोफिशिएंट गिवन है और दो मिरर न्यूक्लियस में से एक का मास गिवन है, दूसरे का पूछा गया है, तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब फॉर्मूला तो यही लिखोगे ना, फॉर्मूला यही लिखोगे। सपोज इसका मास गिवन है और सपोज मान लो इसका मास अननोन है, आपको ये पता है, आपको ये पता है, दोनों न्यूक्लियस का जेड पता है, मास नंबर पता है, एसी भी पता है, तो इसका नहीं निकल सकते हो। Yes, sir. तो मैं We कह रहा can. हूँ, समझ गया। तो ए मास सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला का एक सिग्निफिकेंस है, कूलम्ब कोफिशिएंट आप पता कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज पता कर सकते हो, जैसे आपका मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर पता कर सकते हो, न्यूक्लियर बीटा डीके को भी पता कर सकते हो, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। No, sir. Clear, sir. और अब आप लोग जरा प्लीज, जब टेस्ट होती है ना, एट ए टाइम आप टेस्ट दे दो उसी टाइम, है ना। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जब आप टेस्ट नहीं देते हो, बहुत अफसोस, स्पेशली टीचर को बहुत अफसोस होती है ना। क्लास में जब पढ़ते हो ना, तो वो अब कब रिवाइज करोगे, टेस्ट के पहले रिवाइज करते हो ना, और वही चीज याद रहेगा, है ना। तो प्लीज जब भी आपका टेस्ट अनाउंस होती है, उस टेस्ट को उसी टाइम, इसके बाद जो भी टेस्ट होगा उसी टाइम आप दे लो, है ना। एंड देन क्या होगी उस टेस्ट में, तो आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग सारे एक ही टाइम अपने टेस्ट दे लिया, तो फिर उसी का डाउट क्लास भी लग जाएगा ना। तो ये एक फायदा है, अगर साथ में आप सारे सारे लोग टेस्ट दे लोगे ना। और टेस्ट तो ऐसा नहीं होता, टेस्ट बहुत अच्छे से बनाया जाता है चीज़ों को मेहनत करके। तो प्लीज इसके बाद जो भी टेस्ट होगा उसको प्रॉपर टाइम में दो, उसके बाद आपका डाउट क्लास लगेगा टेस्ट का, ठीक है। ओके, now again if I write that mass formula, I have to write again to discuss that beta decay. So again I'll write that mass formula, mass of a nucleus, the function of Z into A. Okay. Now if I write this, can I write like this also? See, if I make any mistake, tell me. You have a mass of a nucleus, A times mass of a neutron I can write, है ना? And then I can write Z into MP minus Mn. चेक करो जरा, I can write or not, है ना। फर्स्ट टर्म में क्या था आपका जेड एम पी, सेकंड टर्म में सेकंड टर्म में था आपका ए माइनस जेड इंटू एम एन। तो सेकंड टर्म को मैंने ब्रेक कर लिया, ए इंटू एम एन लिख लिया, और जो जेड वाला दो टर्म था उनको कंबाइन कर दिया। सो आई कैन राइट लाइक जेड इंटू एम पी माइनस एम एन, नो प्रॉब्लम। एंड देन यू हैव 1 by c square and a v a s a the power 2 by 3
right? AC z square by 1/3, right? And then you have, और क्या आ जाएगी यहाँ पे? Asymmetric term. A of a minus 2z का square by a plus delta लास्ट में क्या है? प्लस डेल्टा है. नाउ सी दिस सी स्क्वायर, ए भी एस, इसका यूनिट क्या है? दैट कोफिशिएंट, ऑल कोफिशिएंट, इसका यूनिट क्या है? Electron volt. और एनर्जी ऑफ यूनिट. If you divide by c square, now you have this is in the unit of energy. If you absorb this 1 by c square, then it will be converted to what? AMU. Exactly. So this I have written in, or I know the mass of neutron in terms of atomic mass unit. I know the mass of proton in terms of atomic mass unit. So this is nothing but in the form of atomic mass unit. This is also in the atomic mass unit. Now if I absorb this 1 by c square, it will nothing do. It will just, this coefficient will absorb this 1 by c square and it will be converted to atomic mass unit. So I'll not make my calculation complicated, rather I'll absorb it and I'll make all the unit in terms of atomic mass unit or same unit. ठीक है ना? That will not a problem, हाँ, यहाँ पे कोई problem नहीं होगा. So just you have to remember that I'm absorbing this 1 by c square to make that coefficient or constant unit in terms of atomic mass unit. अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो आपका मास नंबर का जो कोफिशिएंट है सारे को इकट्ठा करूंगा. सो आई कैन राइट, इफ आई टेक ए कॉमन, कहाँ से कॉमन जाएगी देखो जरा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव ए, क्या आ जाएगी यहाँ पे? mn आ जाएगी. ठीक है ना? और क्या हो सकती है? AV. minus AV by C square. इसको तो आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, यहाँ पे ऑब्जर्व. Yes, sir. हाँ, सो यू विल हैव माइनस AV. दिस विल बी माइनस माइनस प्लस Plus AS. No, AS. बाय a दी पावर 1/3. और कोई टर्म है? कैन यू प्लीज चेक? नाउ इफ यू ब्रेक दिस टर्म, यहाँ पर अगर इस टर्म को ब्रेक करोगे क्या मिलेगा जरा देखो. a स्क्वायर माइनस 4za प्लस 4z का स्क्वायर. और आप फिर फर्दर किससे डिवाइड कर रहे हो? a से डिवाइड कर रहे हो. तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म. A. सेकंड टर्म क्या हो जाएगा? 4Z. 4z. थर्ड टर्म. ठीक है ना? अब देखो यहां से एक टर्म a का कोफिशिएंट यहां से भी मिल जाएगा. कितना मिलेगा? 1. A sir. a मिलेगा ना? हाँ, इट विल बी हाँ a सर, ये तो कॉमन ले लिया. हाँ, A मिलेगा. a मिलेगा ना? यस सर. Because you have a minus here, minus minus plus, and you will have a of a, मतलब इसके साथ इसका multiplied है. So basically you will get a of a. So this will be the coefficient of a. Now I'll merge all coefficient of z. So first of all I'll have mp minus mn. सर कूलम एनर्जी टर्म भी तो कंटेन कर ही रही है a1 a raised to 1/3. नहीं जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे z है ना, z स्क्वायर है ना, यहाँ पे z स्क्वायर है. How I am combining this I'll discuss in the later. यहाँ पे z स्क्वायर है ना, z स्क्वायर को हम नहीं ले सकते. ठीक है? Because this is I'm treating this is like your constant sum number. So I'll not write that z square term here. Better I'll write in other term. है ना? So now we have a z square coefficient क्या है? ये वाला समझ में आया? She asked that question. Why I'm not taking that this number? Because यहाँ पे आपका क्या है? z square है. ठीक है ना? यहाँ पे आपका क्या है? z square है. Why I'm not taking z square term? Because again I'll come to mass parabola. I'll fix that mass number, but z will be varied.
तो जब जेड देखो, जब आप पार्टिकुलर मास पैराबोलम में आते हो, मास नंबर फिक्स करते हो, मतलब ये वाला टर्म आपका फिक्स्ड हो गया, तो यहाँ पे आप वेरिएबल नहीं रख सकते हो, क्योंकि आइसोबैरिक फैमिली या मास पैराबोलम में क्या है मास नंबर फिक्स्ड है, बट जेड नंबर क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे आप जेड वाला टर्म को नहीं रख सकते हो, क्योंकि दिस इज बी योर कांस्टेंट टर्म। सो विल हैव एमपी माइनस एमएन। और क्या है यहाँ पे, देखो जरा, और कुछ है यहाँ पे, देखो ये टर्म आ जाएगी Yes. -4z है ना, सो माइनस माइनस प्लस 4AA. 4a, और यहाँ पे भी एक माइनस है। देखो यहाँ पे Min- आपका, हाँ यहाँ पे इनसाइड ब्रैकेट यू हैव दिस, ब्रैकेट के पहले एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, उससे पहले एक और माइनस है, तो 3 माइनस है, तीनों को कंबाइन करोगे क्या मिलेगा आपको, minus 4AA. एग्जैक्टली -4a ऑफ a। बट प्लीज प्लीज नोट, यहाँ पे जो है आपका क्या है, आपका एटॉमिक मास यूनिट में है, और बेटा इफ यू एटॉमिक मास यूनिट में है, और अगर एमईवी में लिखना चाहते हो देन दिस विल बी योर एनर्जी, एमईवी और एनर्जी यूनिट बाय सी स्क्वायर, है ना। बट यहाँ पे क्या है, मैंने सिर्फ एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में लिखा हूँ इसको। नेक्स्ट टर्म क्या है, जेड स्क्वायर वाला टर्म, ये बताओ क्या क्या है इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस प्लस, AC by एग्जैक्टली AC बाय ए दी पावर 1/3 1/3, और क्या है, plus 4AA. एग्जैक्टली 4a A by by A. exactly, very good. And you have another term, that will be minus of delta। So plus or minus delta, no sir. हाँ जी, Plus or minus delta, no sir. it will be minus, right, because you have a plus। Okay, okay. ठीक है ना। so this I'll write, will have both minus plus, huh? हाँ जी, नहीं यहाँ पे देखो बहुत माइनस प्लस नहीं, मैंने इसको एक ही सिंबल यूज किया है ना, माइनस प्लस नहीं लिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या है आपका, है ना, डेल्टा का वैल्यू मैंने एक बार एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया है ना, ये नोटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि मैंने डेल्टा को एक बार एज्यूम किया AP बाई ए दी पावर कितना एज्यूम किया था, 3/4 एज्यूम किया था, और आपको एक बार क्या एज्यूम किया था, -AP बाई A की पावर 3/4। तो डिपेंड करती है ना बुक की नोटेशन के हिसाब से। बुक में जैसे आपका इवन इवन कॉम्बिनेशन के लिए इसको प्लस डेल्टा लिखती है, और बेटा मैंने वैल्यू ही लिख दिया इसका, ये है, और ऑर्डर के लिए माइनस डेल्टा लिखती है ना। Yes, sir. तो मैंने एक ही नोटेशन यूज किया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, जब आपका इवन इवन कैसे ऑर्डर कैसे, वहां पे मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। Okay, sir. Okay. ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाला ये है, अब मैं इसको एज्यूम करूंगा, देखो दिस इज योर, आई एज्यूम दिस विल बी योर अल्फा, दिस विल बी योर अल्फा। ए का कोफिशिएंट अल्फा है, जेड का कोफिशिएंट को मैं बीटा एज्यूम करूंगा, और जेड स्क्वायर को कोफिशिएंट को मैं गामा एज्यूम करूंगा। So now I can write alpha A plus beta Z plus gamma Z square minus of delta। Yeah. ठीक है, tell me, is there any doubt?
Well, so now there is important another part. So visual proof. There is no mass parabola. Mass parabola. Very important to understand that beta decay. So first of all, for odd mass number, for odd A, for odd A, delta will be how much? 0, sir. Now the mass of nucleus for odd mass number, क्या लिख सकता हूं मैं? Will be alpha A plus Yes. beta Z plus gamma Z Yes, sir. square. I can write because here delta is 0. Again, I'll come to for isobaric family. For isobaric families. For a given isobaric family, क्या constant हो जाएगी? Yes, sir. A will be constant. जब A constant है, तो न्यूक्लियर मास किसके ऊपर डिपेंड करेगी? Z पर. Exactly. So where for a given isobaric family, mass number will be constant. So nuclear mass for this isobaric family will be function of Z, because for isobar atomic number is different. है ना? So I can see, I can represent, see, अगर इसको मैं y assume करूंगा और z को मैं x assume करूंगा, so I can write, I see, I can see, I can represent that y from constant beta x plus gamma x square. तो किसका इक्वेशन है? Nuclear mass is variable or that is depend upon atomic number for isobaric family. तो डिपेंडेंट फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ x. तो इसको मैं y एज्यूम कर रहा हूं. सो y इज लाइक सम कांस्टेंट प्लस बीटा x प्लस गामा x स्क्वायर. किसका इक्वेशन है? पैराबोला. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मास पैराबोला. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. So for a given isobaric family, A is constant, then mass of a nucleus is depending upon atomic number. So this is the equation of parabola. This is the equation of parabola. That's why it is called mass parabola. So mass of a nucleus for a given isobaric family will be function of atomic number when A is constant, and it will be trace a parabola. So in that parabola, many nuclei can be exist, but the nuclei corresponding to this point having atomic number कितना हो जाएगा? यहाँ पे कितना हो जाएगा एटॉमिक नंबर? अभी में हमने डिस्कस किया था, दैट विल बी Z नॉट. क्यों Z नॉट होगी? क्योंकि मास ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो मास था क्या था? ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस बाइंडिंग एनर्जी प्लस C स्क्वायर. ठीक है ना? अब आप मास नंबर को फिक्स कर दो, मास नंबर को फिक्स कर दो. ठीक है ना? तो न्यूक्लियर मास सबसे ज्यादा, अगर मास कांस्टेंट है, न्यूक्लियर मास सबसे ज्यादा कम किसका होगा? जिसका बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है. क्योंकि आपका बाइंडिंग एनर्जी टर्म में क्या है? आपका बाइंडिंग एनर्जी की टर्म के सामने क्या है? आपका माइनस साइन है. तो मास ऑफ ए न्यूक्लियस will be less if binding energy is high. तो for a given isobaric family, जो न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल है
उसका हमने डिफाइन किया था एटॉमिक नंबर, दैट वाज Z0। तो जो न्यूक्लियस का और जो न्यूक्लियस मोस्ट स्टेबल है उनका बाइंडिंग एनर्जी हाईएस्ट है, और उस न्यूक्लियस का मास लिस्ट होगी फॉर दैट गिवन आइसोबैरिक फैमिली। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी मास ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू माइनस बाइंडिंग एनर्जी पर सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो मास भी कम होगी। The nucleus locating at this point will have minimum nuclear mass, so it will be more stable. Obviously, the atomic number will be Z0. And in that parabola, A is constant, but atomic number is variable. And in that parabola, many nuclei can exist, and there will be beta decay that will be discussed in the next class. Okay. We should stop here. Tomorrow we'll start again. Understood? Okay.